Again, this will not go into the details. So till now, what did you understand? Can anyone just write? Few of you just write on the chat box. Because the question related to the topic of mesangial corpuscles are not asked directly. They are asked as an applied questions, which as I explained it to you. Any question related to the structural understanding of Malpighian corpuscles? If you don't ask, then I don't know what you are understanding, because at present I'm in front of a screen. आप लोग पूछेंगे नहीं तो मुझे समझ नहीं आएगा कि आप सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं. Otherwise, I'm wasting my time and you're wasting your time. Please open up. Write on the chat box. सुन रहे हैं मित्तल? मुझे लगता है मित्तल 4-5 बच्चों के अलावा और कोई सुन नहीं रहा है. Can the number of the mesangial change be used as a prognostic marker? No, it cannot be used as a prognostic marker. Mesangial cell number can be changed because they are derived from the monocytic progenitor cells, so they keep on getting replaced, but they cannot be used as a prognostic marker because they don't have anything specific which can be identified in the blood as a prognostic marker or even in the urine. Any other question? See, feel free to ask question. ये मत सोचिए कि ये कैसा question है, बच्चे हंसेंगे, टीचर हंसेगी, कोई नहीं हंसता. Okay, since you don't have a question, I have a question for you people. If the person is in his urine, you find albumin, you find globulin, as well as you find RBCs. What probable diagnosis you can go for? Where is the defect? Okay, let it be very simple. Where is the defect? वो albumin भी release कर रहा है urine में, वो globulin भी release कर रहा है. In glomerular, can you be more specific? Filtration defect. Okay, food process में defect हो सकता है. Filtration slit and the basement membrane. Very well. What else? Basement membrane. Filtration slit defect. Okay. Normally are not filtered through the glomerular. अगर मान लीजिए the concentration or the amount of protein being excreted, it can be a selective, say for example albuminuria, or it can be a non-selective. Non-selective matlab it can be any type of the plasma protein. If the concentration of plasma protein in the urine is 3.5 grams per deciliter, तो वो डिजीज को हम क्या बोलते हैं? प्रोटीन यूरिया है. It can be an albuminuria, which is termed as a selective proteinuria. It can be any type of the protein, plasma protein, so it is termed as a non-selective proteinuria. मगर अगर इसका value 3.5 grams से ज़्यादा है, if it is more than 3.5 gram, what the person is suffering from? आपने सुना होगा ना, कई बार सुना होगा, बच्चों में बहुत कॉमन होता है. Has anyone heard of the nephrotic syndrome? Have you heard of the term nephrotic syndrome? What is that? Sakina, what is that? Just write, what exactly is that? Excretion of protein in urine. Okay, yes. So it is a defect of the filtration at the Bowman's capsule. So defect is lying in the renal corpuscle part.
या अल्ट्रा फिल्ट्रेशन जो है उनका डिफेक्टिव है, जिस कारण से प्रोटीन लॉस बहुत सारा होता है कि इट्स क्रॉसिंग बियॉन्ड 3.5 ग्राम पर डे, उससे भी ज्यादा लॉस हो रहा है। ओके फाइन। नॉर्मली ये प्रोटीन सिंथेसाइज कहाँ होते हैं? लिवर। इसका मतलब लिवर कितना प्रोटीन सिंथेसाइज करता है पर डे? कैन एनीवन टेल मी हाउ मच ऑफ प्रोटीन इज बीइंग सिंथेसाइज्ड बाय द लिवर पर डे? ये तो हम बोल रहे हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है जब एक्सक्रीशन ऑफ प्रोटीन इज मोर देन 3.5 ग्राम पर डे। Sakina, okay, 10 grams, around 10 to 12 grams per day. We don't have a stat, it's a range, 10 to 12 grams per day. That's very true. That's the maximum. In a normal healthy individual, liver produces maximum protein in the range of 10 to 12 grams per day. पर हम कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन यूरिन में जब मोर देन 3.5 ग्राम्स पर डे आ रहा है तब नेफ्रोटिक सिंड्रोम हुआ। लॉस कितना हुआ? अगर वो 10 ग्राम बना पा रहा है और 3.5 ग्राम ही लॉस हो रहा है तो वो तो कंपनसेट करेगा ना, तो डिजीज क्यों क्रिएट करेगा? कैन एनीवन राइट इट? दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी व्हाट डू यू से क्रिटिकल थिंकिंग। कोई बच्चा सोच के बोल सकता है मुझे? आप कह रहे हो 10 से 12 ग्राम लिवर बनाता है पर डे, अगर उसमें से 3.5 ग्राम लॉस भी होता है तो क्या हुआ? You can unmute and speak if somebody can want to speak rather than writing it on the chat box. If you want to speak, please unmute yourself. सोचो 10 ग्राम बन रहा है, मटेरियल मे नॉट बी एबल फॉर सिंथेसिस। नहीं, मटेरियल तो वहां कहां से आता है? मटेरियल जो आप खाना खाते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट्स वेरी ट्रू, दैट्स फाइन। ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज होगा, दैट्स ओके, बट माय क्वेश्चन स्टिल रिमेन्स द सेम। अगर लिवर 10 ग्राम बना रहा है और किडनी 3.5 ग्राम ही निकाल रही है तो फिर क्यों नहीं कंपनसेट कर पा रही है? वो तो कंपनसेट कर सकती है ना, लॉस तो 3.5 ग्राम्स का है, इट्स द मैक्सिमम एफिशिएंसी। नो, दैट्स नॉट द आंसर। एक्चुअली लॉस 14 ग्राम्स के ऊपर जा रहा है। जो फिल्ट्रेशन में कितना प्रोटीन फिल्टर आउट हो रहा है, दैट इज मोर देन 12 ग्राम्स। उनमें से आधा प्रोटीन डिस्ट्रॉय हो जाता है पीसीटी में, आधे से ज्यादा प्रोटीन तो पीसीटी में डिस्ट्रॉय होता है, और उनमें से जो बचता है दैट इज 3.5। डिड यू अंडरस्टैंड? इसका मतलब ये है क्योंकि 14 अगर 10 ग्राम वो बनाता है, 10 ग्राम में से अगर 3.5 ग्राम लॉस होता है तो कहीं तो डिफरेंस बैठ रहा है। डिफरेंस इसलिए बैठ रहा है क्योंकि लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, दिख कम रहा है मगर हो ज्यादा रहा है। कम से कम 14 ग्राम के करीब पर डे लॉस हो रहा है। 14 ग्राम में से 10.5 ग्राम तो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स में जो सेल्स है वहां वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, खत्म हो रहा है, दैट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड देयर, बिकॉज उसका साइज बड़ा है तो वो ट्यूब के थ्रू जाना भी थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सो इट गेट्स डिस्ट्रॉयड। जो आता है वो है जो हमें दिख रहा है। इसका मतलब डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू जो हमको दिख रहा है। मतलब डिजीज की जो इफिशिएंसी है, जो रिएक्टिविटी है, वो इतनी ज्यादा है पर दिख हमें उसका वैल्यू कम रहा है। इज दिस क्लियर टू यू? So whenever you are trying to read physiology and understand physiology, think on those terms, okay? Because you are not going to read physiology just for reading sake. You have to understand it in terms of disease. Okay, good. So let's move ahead. Let's move ahead. So we completed till now. We completed up to the understanding of renal corpuscle, the ultrafiltration mechanism, how the filtration process occurs, and a bit applied of it, how the diseases are related affecting the filtration process, and then we talked about the tubular system. Now let's talk a bit more about the types of the nephrons. Anatomically, if we talk, there are 3 different types of the nephrons. One is superficial, one is mid-corticular, and one is juxtamedullary type of the nephron.
But if I talk physiologically, and I will talk mainly about physiological, we divide nephrons under two headings. One is cortical nephron and one is juxtamedullary nephron. Abhi cortical nephron, 80% of the nephron in any kidney are cortical nephrons, while only 20% of the nephrons in the kidney are juxtamedullary type of the nephron. अभी आप देखो structure कैसा कितना सुंदर लग रहा है. ये वाला जो part है, someone is written in the chat box. ये देखिए, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन है. देखो कितना छोटा है इसका. ये ग्लोमेरुलर टफ्ट है, पीसीटी है, ये स्ट्रेट पार्ट ऑफ द पीसीटी है, ये डिसेंडिंग थिन लूप ऑफ हेनले है, ये असेंडिंग थिन और थिक लूप ऑफ असेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, फिर डीसीटी है, देन कलेक्टिंग डक्ट. ओके, ये मेडुलरी कॉर्टिकल पार्ट में मैक्सिमम है और इसका मेडुलरी पार्ट जो है लूप ऑफ हेनले का थोड़ा सा ही पार्ट. जबकि जो जक्स्टामेडुलरी है, आप उसमें देखिए इसका जो मैल्पिजियन कॉर्पसल पार्ट है वो सारा का सारा जो है that is lying in the cortex, but the loop of Henle, the majority part of the loop of Henle and the DCT, a part of DCT and the part of PCT, that is in the medullary part of the kidney. देखो ये मेडुला में मैक्सिमम पार्ट, और कितना लंबा है, it's a huge, right? So the question many times comes up, differentiate and explain about the type of nephrons. So when this type of question comes, if you have time, you can draw the diagram. If you don't have time, you can just have it in a tabular format. The cortical nephrons location difference hai. One is located in the upper part of the region of the cortex and another is present at a junction of cortex and medulla. 80 to 85% is mainly cortical type of the nephron in a kidney, while 15 to 20 is juxtamedullary type of the nephron. The size of the glomerular in the cortical part is small, while in the juxtamedullary the size is big. The loop of Henle is small in cortical nephron, while it is very big in juxtamedullary. The ascending limb of loop of Henle in the cortical, it is mainly containing thick segment, while in the juxtamedullary it has thin as well as thick segment. So अगर हम देखें तो लूप ऑफ हेनले के तीन पार्ट्स हमने बताए थे, थिन डिसेंडिंग, थिन असेंडिंग और थिक असेंडिंग. तो कॉर्टिकल में थिन असेंडिंग वाला पार्ट जो है वो मिसिंग होता है. Afferent arteriole, normally there is an afferent arteriole, goes into the glomerular, segregates into the glomerular capillary tuft, then enters into the efferent arteriole. This efferent arteriole in the cortical nephron is further divided into a capillary which is termed as peritubular capillary network, while in the juxtamedullary it is further divided into a small diameter part which is termed as the vasarect. तो कॉर्टिकल में पेरिट्यूबुलर कैपिलरी मेशवर्क है, यहाँ पर उसके अलावा वैजारेक्ट. अनदर डिफरेंस, कॉर्टिकल नेफ्रॉन्स में फिल्ट्रेशन रेट स्लो होता है जबकि मेडुलरी में हाई होता है. मेन फंक्शन ऑफ द कॉर्टिकल नेफ्रॉन इज एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स इन द यूरिन, while the main function of the juxtamedullary nephron is concentration of urine. अब ये CCS जो है system, we'll talk about it in detail. The cortical nephron, the special function is reabsorption of sodium, while juxtamedullary, as I said, it is reabsorption of urine concentration or doing the urine, performing the urine concentration. Cortical nephrons may the regulation of reabsorption, it is auto-regulated, while this auto-regulation is absent in juxtamedullary nephron. Even JG apparatus is mostly absent in juxtamedullary nephron. So these are some of the differences. This is the structural difference. These are some of the differences between the cortical nephron and the juxtamedullary nephron. This is being asked as a question. You should know the difference between these two types of nephrons. Again, the cortical nephron and the juxtamedullary nephron. Okay. Now, one question I just wanted to ask. Why is the loop of Henle useful? Ma'am, can the portion of these can be altered? Proportion of these be altered? Yes, they do
definitely the cortical functions will be deranged. If the disease in the kidney is affecting mainly the medullary, the juxtamedullary portion, then definitely the juxtamedullary portion will be affected. So signs and symptoms will be accordingly presented by the patient. That depends कि defect कहाँ है. Okay, now the question is, why is the loop of Henle useful? भगवान ने अगर ये loop of Henle बनाया because counter current mechanism for concentration of the urine. Okay, to maintain the iron and urea concentration of urine. Okay, Henle's loop, maintaining osmolarity, very good, very nice. What else? Desert में आप लोग who has gone to a desert, a real desert? To increase concentration of urine. Okay, good. Reabsorb useful substances again. Okay, great. डेजर्ट में किसी ने ऊंट को देखा है? हाँ, देखा है. तो ऊंट काफी देर तक पानी पिए बगैर जिंदा रहता है. नहीं देखा है ऊंट? पिक्चरों में तो देखा होगा ऊंट. हम एकदम they have long loop of Henle. Wow, wow, that's great. Yashvi, that's good, that's good. So I was just going to ask the question related to the same thing and I got an answer. So what is the importance of having a loop of Henle? The longer the loop of Henle, more the concentration of the urine will be there in the medullary end. So high the ability to reabsorb water. तभी कोई भी डेजर्ट एनिमल का अगर आप उनके किडनी का नेफ्रॉन देखते हैं तो उनमें बहुत लंबा लूप ऑफ Henle होता है. It's much bigger than that of the human. Right? Now, why is it so? Because more the loop of Henle, bigger the loop of Henle, more will be the reabsorption of the water, specifically the thin wala part, not the thick. Thick ascending limb में water का reabsorption नहीं होता, right? Mostly in the thin loop of Henle में water का reabsorption होता है. So since they live in the desert, there is a requirement to absorb more amount of the water, to store more amount of the water. Urine should be very much concentrated. Specifically in desert animals like ostrich, like camel. Have you ever seen double humped camel? How many of you have seen more absorption of water? Very true. End part of the Henle is helpful. No, beta, not end part. We don't say anything like an end part of Henle. The thin limb or a thick limb. It's basically the thin limb where the water reabsorption. Thick limb में कुछ भी water, it has tight junction. Thick limb में tight junctions होते हैं. वहाँ कुछ भी absorb नहीं होता. अगर absorption होता भी है तो active transport mechanism से होता है, passive नहीं होता. So it is basically the thin loop of Henle. जितना ज़्यादा वो बड़ा होगा उतना ज़्यादा water का reabsorption होगा. And please don't use the word absorption. Use the word reabsorption because absorption occurs in the GIT part, the intestine part, or the GIT. When we say reabsorption, it means of because it has already been absorbed in the intestine. Now it is being absorbed again in some other part of the body. So we say reabsorption. We don't use the word absorption. So use your words very nicely. Fine. So this was all from my side as far as today's session is concerned. In the next lecture, we'll be talking about the renal blood flow and JG apparatus. They both are very important, not only for understanding the physiological basis, but also as far as your exam point of view is there. Because many of you study only for exams. Am I right? Yes or no? Any question?